Good morning, children. Today we are going to start exercise 2E. Everyone do the question number question MC question of exercise 2D yourself. And if you have any query, you can take on my personal number. Let's start question number 1 of exercise 2E. Find the value of each of the following. If we divide 0 by any number, we get 0. Okay. So 0 divided by 39, we get 0, its answer. Similarly, if we divide 0 by 975, we get 0. It is answer. So simple. If we divide any number by itself, यानी कि जो भी नंबर है उसको यदि हम उसी नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1. तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 डिवाइडेड बाय any whole number is 0. यानी कि if we divide 0 by any whole number, we get 0. Okay. Now, if we divide number itself, then we get 1. 5 divided by 5 is equal to 1. It means A, if we divide A by A, is equal to 1. तो बच्चों कभी भी किसी भी नंबर को हम अगर उस नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है 1. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट. 701 minus 1869 divided by 1869, it means it is 1. मैंने अभी बताया था A divided by A is equal to 1. यानी कि if we divide number itself, we get 1. Now 701 minus 1. 701 minus 1 is equal to 700, its answer. 700 its answer. Now fifth part of this question. 3278 divided by 3278, it is 1. Bracket close. Now minus again 5098 divided by 5098 is equal to 1. Now 1 minus 1 is equal to 0, its answer. Okay. Now question number 2. Replace the letter by a suitable numeral to make a true statement. 0 divided by B is equal to 0. मैंने अभी बताया था if we divide 0 by any whole number, we get 0. So we put B इज़ इक्वल टू एनी होल नंबर. हम कोई भी होल नंबर इसमें ले सकते हैं. सपोज़ वी टेक 3, 4, 5, 7. तो 0 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 0. तो वी टेक B इज़ इक्वल टू एनी होल नंबर. लेट्स B इज़ इक्वल टू 7. तो हमने क्या लिया 7. नाउ 48 डिवाइडेड बाय 48 इज़ इक्वल टू, तो A डिवाइडेड बाय A इज़ इक्वल टू क्या आंसर आता है 1. तो 48 डिवाइडेड बाय 48 इज़ इक्वल टू 1. सो यानी कि देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 1. इन द प्लेस ऑफ n वी टेक 1. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट. P डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 0. तो मैंने आपको बताया था 0
divided by any whole number is equal 0. So we take 0 here. So therefore P is equal to 0. We take 0. So 0 divided by 7 is equal to 0. In the place of P we put 0. Now M divided by 708 is equal to 0. It is similar to the third part. 0 divided by any whole number is equal 0. So we take, therefore M is equal to 0. So by putting the value 0 divided by 708 is equal to 0. In the place of M we write here 0. Divided by 708 we get 0. So M is equal to 0. Now next question we will do in next video.